Hello everyone, good evening and welcome back to my video. और हम इस वक्त घूम रहे हैं बर्न स्विट्ज़रलैंड में और इस वक्त एक ब्रिज के ऊपर ये नीचे दरिया का मंजर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। This is the cathedral, Bern. Tomorrow we'll go up there. नाइस। टोनी चाचू ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे द कैथेड्रल ऑफ बर्न, ये इसका नाम है, द कैथेड्रल ऑफ बर्न। एंड हाउ ओल्ड इज दिस? Oh, I think they started, that took quite a while to build, But it must be centuries old. Yeah, that must be, I think they started maybe 600-700 years ago. Oh, okay. तो ये कह रहे हैं कि ये 600-700 साल पहले बनना शुरू हुआ था और कुछ सालों में बना होगा, तो सदियों पुराना है ये कैथेड्रल। क्या खूबसूरत व्यू है शाम का वक्त। दरिया का पानी, उसका रंग आप देख सकते हैं कितना साफ़ शफाफ। ये स्विट्ज़रलैंड, पूरे यूरोप में आपको ख़ास तौर पे स्विट्ज़रलैंड में ये सफाई सुथराई तो कमाल की नज़र आती है, मिसाली। See why they have to leave the river. Yeah. शाम के वक्त बहुत ही पुरसकून है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हर कोई चहलकदमी कर रहा है और बड़े मज़े से अमन की कैफियत में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। Hotel Bern. This is a 5-star hotel. Okay. So you can pay easily for one room, one night more than 1,000 Swiss francs. हाँ, ये यहाँ का 5-स्टार होटल है जी, और वो कह रहे हैं कि 1000 फ्रैंक इसका किराया है, लिहाजा हमें इससे कोई सरोकार नहीं। Bellevue, it's in French, Bellevue. Bellevue means Beautiful view. Yeah, Bellevue. C'est Bellevue. हमें थोड़ी बहुत, And that's true. This is a beautiful view from there, हमें थोड़ी बहुत फ्रांसीसी आती है। This is now the oldest part of Bern, on this side. टोनी चाचू कहते हैं कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, Walk back. ये सबसे ओल्ड पार्ट है बर्न का, और वो कह रहे हैं कि हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं। I'm making a video of this walking tour, so Whatever you like. people could see Bern. It's very amazing. Those people who cannot come over here, Yeah, sure. they can watch it and have the feel of the place. और ये देखें जी मेरे सामने, ये लेफ़्ट साइड पे जो एक टेरेस सा बना हुआ है किसी कैफ़े का और रेस्टोरेंट का, और वो खातून भी इशारा कर रही है, तो बड़ा खूबसूरत। ये यहाँ की आज़ादी का एक इजहार है कि लोग अकेले भी एंजॉय करते हैं और बुरा नहीं मानते किसी चीज़ को। Museum. They have the history a few thousand years back. And they have what you say, relics and artifacts related to Europe only, or the world? To this place. Okay. ये खातून
मेहनत करते हुए। बहुत ही खूबसूरत शाम का वक्त, यहाँ पे बादल आए हुए हैं और मज़ा आ रहा है चल फिर के, घूम के। I'll just go down to the river here. हम्म। You should cross the road. Yeah. Down here? Okay. अब हम नीचे उतर रहे हैं। आई थिंक टोनी चाचू हमें कोई दरिया के पास लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत रास्ता बना हुआ है जी और बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर चल के। मैं तो चूँकि वॉकिंग का एक बड़ा वॉकिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ का बड़ा शदाई हूँ, तो आई रियली एंजॉय वॉकिंग स्पेशली इन द इवनिंग्स। और ये रास्ते जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, बहुत लश ग्रीन। Yeah, you're in the middle of the city, Yeah, and this is a kind of a forest, you know. yeah, this is a kind of forest. Yeah, I was just you're saying it on the video that Okay. these passages, you know, they are so green and you have the shade of the trees. Yeah, just a few minutes before, we just been in the Parliament building. Yeah. Now we're somewhere in the forest, very close. Now we just follow the river this way. लीजिए, अब हम दरिया के पास चलेंगे। What's the name of this river? Are, Or are, Orde. are. How you spell it? It's A-A-R-E. R. Oh, Ore. 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 ले जी, आरे दरिया है ये जो बर्न के, and this is the only river flowing in through Bern. Yeah. Okay, This is huge. this is huge. A huge river, you know. तो For वो ये Switzerland. for Switzerland. तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आरे दरिया है ये बर्न में, ये आपको नज़र आता है अक्सर जगहों से, और ये बहुत बड़ा दरिया है जिसको अभी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखें, ये सामने ओल्ड बर्न की बिल्डिंग्स हैं और ये सामने आप हमारे आरे दरिया है। वो सामने जो है एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। वाह, क्या मज़ा आ रहा होगा उन लोगों को जो वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, कि नीचे जो दरिया का खूबसूरत मंज़र है, जिस तरह से वो
चट्टानों के साथ पानी टकरा रहा है, उनको ऊपर बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा होगा। So clean, you can drink it. हाँ, तो कह रहे हैं कि पानी यहाँ पे इतना साफ़ है दरिया का कि आप उसको पी भी सकते हैं। ये बात होती है ना कि तरक्की याफ्ता कौमों की कि इन्होंने एनवायरनमेंट को बड़ा खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है, बर्बाद नहीं किया हुआ। ओके, सी यू लेटर।